हाँ, so apparently मैंने वेबसाइट कह रहा हूँ वेब सीरीज अपलोड किया, उसके बाद मैंने कुछ अपलोड नहीं किया था and I was thinking to upload some new project I was working on, पर फिर कोरोना ने इसे दस्तक दी. ठीक, so अब हम ये कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग टाइप्स कुछ. हम घर में इतने वेले बैठे हैं, हमने सोचा चलो रिवाइव करते हैं अपने YouTube चैनल को. पापा लाइक इंजीनियरिंग कर ले जो करने के लिए भेजा है. हाँ, तो आज हम महान आदमी थीसियस की स्टोरी देखेंगे. प्रोनाउंसिएशंस में मत जाना, जो नरेशन की है वो इंडियन इंग्लिश में की है हमने. इंडियन इंग्लिश में करिए, इंडियन एक्सेंट में करिए. इंडियन इंग्लिश नहीं ऐसा नहीं भाई, यूएस इंग्लिश, यूके इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश. तो बी प्राउड. थीसियस कौन था? थीसियस ग्रीक हीरो था. ठीक है, वैसे मैं ऐसे थोड़ा लाइक ऑडियंस को डिस्क्लेमर दे दूं कि ग्रीक हीरो था. हम उसकी थोड़ी स्टोरी पढ़ने वाले हैं क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत ही स्पाइसी. हाँ, काफी स्पाइसी. और ये अपैरेंटली हरक्यूलिस का बीएफएफ था. हैं? हाँ, आगे जाके बीएफएफ बन जाते हैं. नहीं, हम उतना डीप नहीं जा रहे. नहीं, लोगों को पता नहीं ना कौन है हरक्यूलिस. पता है लोगों को. हाँ, ये भी है. एंड हरक्यूलिस साइकिल नहीं है. Aegeus, one of the primordial kings of Athens, didn't have a male heir. Desiring an heir, he asked the oracle of Delphi for some advice. Oracle's cryptic words were, "Do not loosen the bulging mouth of wineskin until you have reached the height of Athens, lest you die of grief." With these wise words, it was obvious Aegeus didn't understand the prophecy. He asked the advice of the host Pythias, the king of Prison. Pythias was like, "Yeah, homie, I know what you want to know, and I understand the prophecy." He got Aegeus drunk and gave him his daughter Aethra. भाई यार, ओरेकल ने पता नहीं क्या बोल दिया यार, मेरे को समझ नहीं आया. I don't know, like ये वो होते हैं ना जो सीबीएसई के बच्चे, जिनको लाइक एक चैप्टर पढ़ाते बायो का, उनको समझाते नहीं लाइक मतलब कहते ओ मैं पढ़ा. एक्चुअली मतलब लेजेंड में ऐसा था, मेल एयर नहीं था इस पे, सारी लड़कियां थी इसके बच्चे. अच्छा, सब बच्चे अरे ऐसा डिडंट हैड मेल एयर. मुझे यही तो हुआ यार. मुझे लगा ऐसी कुछ ट्राई कर रहा है हवा में. लाइक मेरे बच्चा नहीं हो रहा यार. But following the instructions of Athena in her dreams, Aethra left the sleeping drunken ass of Aegeus and waded across to the land of Sapphira that lay close to Trajan's shore. Then she poured a libation to Poseidon and was possessed by the sea god in the night. This mix gave Theseus a combination of divine as well as mortal characteristics to do wonders in the world. This double paternity of one immortal and mortal was a familiar features of other Greek heroes. Such a culture. कितना डिसअपॉइंटिंग होगा. एथरा एकदम पूरे ड्रेस लॉन्जरी में आई, एकदम रूम में एंटर करी, देखा भाई एक ये सो रहा है ऐसे खराटे मार के. उसके बाबू पीछे से जा सो बैठ, तेरे को बच्चा मिलेगा. एंड एथरा गई उसके साथ मचाने के लिए, पर ही जस्ट सो गया. सो एथना से ये क्रिंज देखा नहीं गया, तो शी इज लाइक तू जा भाई, तू जा, अपना बंदा भेज रही हूँ. एंड पोसाइडन वाज लाइक हे आज तो पार्टी. After Aethra became pregnant, Aegeus decided to return to Athens. Aegeus like, हैं? ये मैंने पहले क्यों नहीं करा? ये तो एक बार में हो जाता है. मुझे बस सोना है लड़कियों के बगल में. टिपिकल क्रिश्चियन फैमिलीज की तरह. जैसे बाइबल में लिखा है, हाथ पकड़ के सो जाओ. I am virgin and this is Mary. Before leaving, however, he buried his sandals and his sword under a rock, a huge rock, and told Aethra that, "Tell your son to retrieve these items after he has grown up to prove his royal parentage, though he was not his father." In Athens, Aegeus was joined by Medea, who had left Corinth, and after starting some children, she had been born, and Aegeus had a new consort, priestess consort, together represent the whole daughter in Athens, blah 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 blah. बड़ा सा घर है, उसके बैकयार्ड में एक बड़ा सा पत्थर रखा है. जो पत्थर क्यों रखा है? मेरा बेटा जब बड़ा होगा ना, मुझसे उठा के उसमें से चप्पल और वो लेगा, चप्पल लेगा. अबे सर्विस अलाउंस तो देके जाता है इतना को, मतलब पैसे बच्चे पालने के.
अरे भाई वो अभी भी शॉक में थे, लाइक इसको नहीं पता ये बाप नहीं. Thus Theseus was raised in his mother's land. When Theseus grew up and became a brave young man, he moved the rock and recovered his father's tokens. His mother then told him the truth about his father's identity, and that he must take the sword and sandals back to King Aegeus to claim his birthright. उसके बाद हाँ वो एजियस के पास ले जाना था, ठीक है, टू क्लेम हिज बर्थराइट, जो था भी नहीं. पोसाइडन इतना बढ़िया खक्कर है. Theseus had two ways to get to Athens. Either he could travel by the sea, and being the son of Poseidon, the sea god, it will make the most obvious, safe choice. Or he could travel by the land and encounter 6 underworld entrances with 6 vicious monsters that can ruin your day. He chose the land, because he's the man. पानी से क्यों नहीं? आसान रास्ता, क्यों? सीधा रास्ता. क्यों? आप कुछ बता नहीं रही है मुझे पता है क्यों. बेटा जब मैं तुमसे प्रेग्नेंट हुई थी ना, तुमसे एक बार ना जब तुम्हारे पापा आए थे यहाँ पे, वो खूब ड्रंक होके सो गए. हाँ तो मैं बीच पे चली गई थी. ओके. पापा मछुआरे थे लगता है. किंग है एथेंस के. अकॉर्डिंग टू माय वाइस फादर, जिनने अपनी चप्पल और चक्कू पत्थर के नीचे छोड़ के भाग गए, जिनको लगा कि लड़कियां एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है. आई चूज लैंड. Theseus left Trojan to set off his journey to Athens. He traveled by the land across the Saronic Gulf and soon reached Epidaurus, the first entrance to the underworld, which was guarded by the gatekeeper Periphetes/Pp. Pp was the son of god Hephaestus and mother Anticlea. Mother, he was son of a mother. Like his father, Periphetes or Pp was lame in one leg. Pp also had one eyeball, like a cyclops. Pp used to rob and terrorize villagers and travelers on the road between Trojan and Athens. One day, randomly, he decided to travel to Athens to claim the spot of king. He had a bronze club as his weapon, and he crossed paths with Theseus. They fought, and in the end, Theseus hurled a large boulder right into Pp's head, striking him dead. Obviously, Theseus picked up the bronze club and claimed it as a trophy to show all that he had slayed Pp. हेफेस्टस लेम था ना, दोनों पाँव से. दोनों एक. नहीं, हेफेस्टस दोनों पाँव से लेम. अच्छा, हेफेस्टस देखा. हाँ, उसने सिर्फ आधी चीजें एक्वायर करी, अपने दोनों पेरेंट्स से. एक साइक्लोप थी और एक आधा लेम था, मतलब पूरा लेम था. एंड फिर रैंडमली एक दिन निकल जाएगा कि नहीं मुझे थ्रोन चाहिए. थीसिस इतना बैडनेस है एकदम, वो उसका क्लब लेके चला गया कि लाइक हाँ अब ये मेरा है. वो शो ऑफ करेगा, वो मैंने हैंडीकैप को मारा. स्लेयर ऑफ मीम्स. Theseus soon came to Isthmian, where the second entrance and Theseus' next challenge awaited. A bandit by the name of Sinus guarded the next entrance. He would capture travelers and tie them to bent trees and release the trees, catapulting his victims to their doom. Interesting. Well, Theseus gave Sinus a little taste of his own medicine because Theseus was a mafia. He not only ended Sinus' life by catapulting him away, he also slept with his daughter and bore a child and even named him Melanimpl something. अबे इसमें लिखा है टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन. तो थीसियस ने उससे पकड़वा के रखा ना कि तू वो पेड़ के एज से पकड़ के रख, मैं बेंड करता हूँ. हाँ अबे तो इसमें क्या है कि उसने अपने विक्टिम्स को कैटापुल्ट करता है, ठीक है. तो कैसे, मैंने वही बोला ना कि तू, मैंने पकड़ ऐसे पीछे खींचा, ठीक है, एंड तेरे से बोला कि तू पकड़, एंड फिर मैंने बोला छोड़ना मत, और तूने छोड़ दिया, मुड़ के चला गया. ओह कैसे चाहता है. छोड़ना नहीं. थीसियस इतना बड़ा बैडएस है, वो जाके लाइक एंड सिनस को उड़ा दिया, एंड उसके बाद उसी की बेटी के साथ सेक्स भी करा. एंड इट्स लाइक मैं बेटे का नाम भी रख के जाऊं. तो बहुत टाइम. Soon after, Theseus reached Crommyon, where an evil beast, a ferocious man-eating pig, was waiting for him. With a single strike of his bronze club, he turned it into a Greek IRL bacon salad. With breakfast in his stomach,
he moved on. और वहाँ पे डेस्टिनी की सबसे बड़ी आयरनी बैठी होती है, मैन ईटिंग पिग. I was like, Theseus like, ये गलत है, इसको उल्टा होना चाहिए. Making everything right. The fourth entrance, located in Mega, was guarded by an old bandit by the name of Skyron. This part of the trail winded along a narrow cliff. Skyron would force people to the edge of the cliff and force them to wash his feet. When the traveler would bend down to wash his feet, Skyron would kick them off the edge to be eaten by one of the Poseidon's sea monsters. Skyron saw the young hero Theseus walking towards him, and Theseus was a mafia and a man, so he kicked the old man instead. Moving on. बेटा मेरे पाँव धोने में हेल्प कर दो मेरी. जा समुद्र में धो ले. मैं ऐसा नहीं करूँगा फिर से. Bucket list check. Old man handicap. In Eleusis, Theseus was challenged to wrestle the king Circeon. Never mind, the king was defeated, so moving on. Circeon was no more. Damn it. The last entrance was just outside Athens and was guarded by Procutus the Stretcher, a very disturbed individual. He would offer weary travelers a bed to stay at night, and what he would forget to mention is that he would be custom tailoring the travelers themselves to fit on the bed. So at night, when the travelers are fast asleep on Procutus' bed, he would come and strap them and stretch them until they're dead or fit his bed, which rarely happened. One night, while wandering on the edges of Athens, Theseus comes across Procutus, who offers him his bed. Tired Theseus accepts the offer and then goes on to sleep. While sleeping, Procutus approaches Theseus to strap and stretch him to kill him. But then Theseus jumps off the bed and stretches Procutus instead. Savage. अबे वो जो हिंदी वाला टर्म नहीं होता कि आ जाइए लंबे हो जाइए मेरे बेड पे. स्ट्रेचर एक एपिक प्रैंकस्टर है. Yes, Theseus उससे बड़ा prankster है. Prank gone wrong. Prank gone wrong. Okay. I guess इतनी स्टोरी थी. हाँ. हम आगे का डिस्कस नहीं करेंगे. Theseus बहुत बोरिंग हो गया. उसको कुमार से यार very bad person. हाँ. इसके बाद वो सीधा एथेंस पहुंच जाता है और कुछ. जो भी एजेस उसका जो फादर होता है वो लाइक अरे ये तो मेरी चप्पल है. तो इसमें हरक्यूलिस कहाँ आता है? हाँ? हरक्यूलिस कहाँ आता है? वो तो बाद में आता है. वो तो बाद में फिर हरक्यूलिस जब आता है इनके साइड एडवेंचर्स वगैरह होते हैं. Theseus लाइक तुमने द स्ट्रेचर का नाम सुना है? सुना तो है. हाँ मैंने सुना है. वो लाइक प्रैंक करता था. उसकी लास्ट वीडियो पर वही थी प्रैंक गॉन. Okay, subscribe to Theseus, subscribe to us, like, share. पता नहीं बहुत awkward लगता है बोलने के. सॉलो क्या बोलूँगा करने का? सॉलो